Welcome to the 5th episode of FBS Talkies. Today we have another experienced personnel with us. He's in the field of veterinary. He's a doctor, he's a colonel, he's retired from army. His name is Dr. Sudhir Yadav. I want sir to introduce himself today. Yeah, I'm Colonel Sudhir Yadav. Yes, sir. I have served in the army for over 33 years. Presently a canine consultant, and I have a master's in veterinary surgery and radiology and expertise in medical and surgical procedures in canines. Sir, for how long have you been a veterinary doctor? Well, I did my graduation in 83 and post-graduation in 86. And sir, what motivated you, back in the day to become a veterinary doctor? When I guess, like even today, अगर मैं अपने घर पे बोलूँगा कि मम्मी पापा मुझे डॉक्टर का जानवरों का डॉक्टर बनना है, तो उन्हें ऐसे नज़रों से देखेंगे. उस टाइम की आपकी क्या मोटिवेशन थी? आपने कैसे कन्विंस करा घर पे? Well, I wanted to be right from beginning, like we used to have animals in our village, and then I was too fond of animals. Then I was interested in the biology, life science, and we had a family friend also, so that motivated. And basically, I wanted to be a army vet. Oh, that's a different field, different focus, veterinary, but army veterinary doctor focus, especially. So that's great. So guys, today we're going to talk about a very unusual but important topic. I had lost one of my dogs. If you know me and my dogs, Bailey was lost because of this issue. So we are going to talk about platelets. What are low platelets? What does platelet do? What are the symptoms? How to fix it? And I also lost Bailey because उसका platelet कम हुआ तो उसका surgery नहीं हो पाया time पे, and eventually her organs failed, unfortunately. So that's when we decided that platelet is one thing that, as me and as my organization, we have to do something about it. So we have developed great formulations also to maintain stable platelets. But before I go ahead, मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, what are platelets and करते क्या हैं platelets एक dog की body में? Yeah, platelets are small cell-like particles, and they are colorless blood cells. Okay. And they are formed in the bone marrow, and they are released in the blood. They are also known as thrombocytes. The technical name is thrombocytes. अच्छा. And sir, usually जब हमें जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है, तो हम बड़ा सुनते हैं कि प्लेटलेट गिर गए. Yes. तो अगर ह्यूमन और वेटनरी का कंपेयर वो देखा जाए तो मतलब वेटनरी में एक डॉग का अगर हम फोकस कर रहे हैं तो कितना प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, कितना लो होता है, कितना एक्सट्रीमली लो होता है, और अगर हाई है प्लेटलेट काउंट तो क्या कुछ हो सकता है? See, normal healthy dog should have a platelet count of 1,75,000 is a big range. Okay. 1,75,000 to 5 lakh per microliter of blood. Okay. And this range, if this range is there, that is normal. If they fall below this, then it's low platelet count. If it increases, then it's a high platelet count. And there are defects of if the platelet count, the function is impaired. Okay. That is another problem. But mostly we encounter in dogs or pets, you can say even the cats also, that is the low platelet count. That is thrombocytopenia. Thrombocytopenia. Yeah, cell is the thrombocytes. Yeah. And the low platelet count is thrombocytopenia. So guys and girls, whoever is watching this, अगली बार अगर आपको डॉक्टर वैसा कोई वर्ड बोले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इसका मतलब वो है लो प्लेटलेट काउंट. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. उसका सिंपल सा मीनिंग है लो प्लेटलेट काउंट. अब हम सर से समझेंगे सर कितना लो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, फिक्सेबल है, और कितना फेटल हो जाता है? See, normal range, below range is 1,75,000. If it falls below this, that is low platelet count. But if there's a decrease of 20 to 30,000 platelet count below this 1,75,000, then the bleeding disorder is going to be there. Bleeding disorder? Yeah. So simple is that like morning we shave ourselves. हाँ जी sir. There's a small cut. So
you find immediately after that cut, the blood clots and things become normal. Normal, yes. So the main role of platelet is that. Okay. So similarly, stop the bleeding. Yeah, stops the bleeding. Stop excessive the flow of blood. Otherwise, if the blood keeps on moving out, so we'll loss of blood. Okay. So immediately the clot formation, and that actually at the site they group together. They form a clot. Okay. Then it plugs the injury, okay. And either stop the blood or they slow down the blood. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, जे हम प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्लेटलेट काउंट होता क्यों है। हमें इंसानों का तो मैं बता सकता हूँ जी, डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, मुझे 3 बीमारियां पता हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। डॉग्स में प्लेटलेट काउंट कम होने की कॉमन बीमारियां और उसके रीज़न क्या है सर? सबसे ज़्यादा लाइक व्हेन यू सी first is drop in platelet count one is when the excessive flow of blood. Like if injury is there and blood is coming out, flushing out. अच्छा, मतलब blood loss हो गया body में, ज़्यादा खून निकल जाता है. Yeah. So with that platelets will also come out. अच्छा. Small injury is there, they will clot. But if बड़ी injury है तो blood, that is a big hemorrhage, excessive hemorrhage is there. So blood will come out and the platelet will also come out. So that is main reason, one of the during the accident you can say. Okay. Then we have like infections. Okay. Like in dogs there's a anaplasmosis. Okay. Then we have tick-borne infections like E. canis, Ehrlichiosis canis. Then we have Lyme disease, again tick-borne disease. Okay. So in these diseases there is a drop in platelet. Also, when we have a certain infection like in canines, like distemper, parvo, this leptospirosis, even ICH, infectious canine hepatitis, and even the heartworm disease. Okay. There's a drop in platelet. तो मतलब अगर सर एक तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर दूसरी बीमारी जो डॉग्स में हो रही है, उससे प्लेटलेट का ड्रॉप आएगा ही आएगा बॉडी में. If you anytime if you see if a pet or dog coming to hospital or wherever the clinics, you will find 5% of drop in every dog. 5%. And sir, इसको मतलब अगर मैं अपने हमारे व्यूअर्स के लिए पूछूं तो क्या ये फेटल है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सीजन चेंज की वजह से बस डॉग को बुखार हुआ और उसमें प्लेटलेट्स गिर गए और हमें पता नहीं चला, तो क्या ऐसी चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें फेटल हो सकती हैं या फिर एक्सट्रीम बीमारी में ही प्लेटलेट का रिलेशन है? See, platelet, this itself is not a disease. This is a symptom. Disease is something else. This symptom we see low in platelet is because of some other disease. तो मान लीजिए सर मेरे डॉग को टिक फीवर हो गया. अभी हम लोग टिक फीवर पे भी कवर कर चुके हैं एपिसोड. हाँ जी. बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता टिक फीवर हो गया. करेक्ट. लेकिन तो अब टिक फीवर में सर प्लेटलेट काउंट डाउन जाता है. तो ऐसा मैं देख के कैसे पहचान सकता हूँ डॉग को कि यार इसका ना प्लेटलेट काउंट गड़बड़ लग रहा है? See, one is if like pet parents, they are well aware of the symptoms. Like most common symptom is like suddenly unexpected you see a hemorrhage on the body, any part, unexpected. Sudden hemorrhages, like spots are there. That is one of the reason. Anywhere on the body or on the gums. Yeah. So this is one symptom. Then you will see dark color feces. Okay. Fever is there. Okay. The dog, because blood is related to dog, you will find lethargic. See, and even the urine also sometimes there is a blood. Okay. And there's an excessive flow of like mucus from the nostrils. Okay. There can be coughing also. Okay. And if you go to the hospital, like there are the facilities there, and vet examines it, then you may find the murmurs also, heart. And dog, because of this, because
see, if you can correct it well in time, it's fine. Otherwise, in serious condition, the dog may collapse also. Okay, so coming to the next point, but before we start the next point, अगर मैं इस point को brief में हम लोग बात करना चाहे तो basically cuffing, being lethargic, spots on gum, different color of urine and poop, feces and also, feces, darker colors, and blood in urine. These are all symptoms of low platelet count, and if you see any of them, आप अपने डॉक्टर को सबसे पहले कंसल्ट करिए. अब सर इस को प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐसा होता है कि पहले डिजीज़ का इलाज करें तो प्लेटलेट अपने आप ठीक हो जाएंगे, या फिर हमें साइमल्टेनियसली डिजीज़ का इलाज करते हुए प्लेटलेट के लिए भी दवाई देनी पड़ती है? See, if you if it is a normal platelet drop, so most of the pets or dogs, they will respond to the treatment. Okay. If it is immune-mediated drop is there, because in canine this is immune-mediated, this thrombocytopenia is there. Okay. ITP is very common. So if drop is there and immediately we start treating, suppose we examined it and we found a drop in platelet, so it will respond, and 80% dog responds to the treatment. Okay. But we have to see the underlying cause of the disease, because this happen in, like I told you, one is your infections, even immune-mediated diseases. Then when bone marrow infections, bone marrow diseases are there, lymphoma, lymphocytopenia. So if that cause is there, then we have to go detailed, we have to treat that. तो बेसिकली सर मान लीजिए टिक फीवर हो गया मेरे डॉग को, जैसे आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के डॉग्स को टिक फीवर हो चुका होगा या चांसेस है होने की, तो मैं अगर टिक फीवर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया तो क्या वो मुझे प्लेटलेट के लिए अलग दवाई देगा या फिर टिक फीवर का इलाज करेगा तो प्लेटलेट अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे? When they see the blood picture, they will, that's a complete blood count. They will find a drop in platelets, and they should give a tonic, because 5% drop will definitely, 5% of animals like pets coming to hospital or clinics, you will definitely find a drop in platelet count. So one should start, if not just a supportive treatment, you can start. ठीक है सर, अब आते हैं कि मान लीजिए हमने घर पे नोटिस कर लिया डॉग को कि लथार्जिक हो रहा है, फीवर भी है, सलाइवा भी ज़्यादा निकल रहा है, स्पॉट्स भी है गम पे, और अब डॉग कुछ मान लीजिए डॉक्टर नहीं है, 2 दिन छुट्टी पे है मेरा डॉक्टर, तो मैं घर पे ऐसी कोई दवाई हो जो उसे पिला सकूं या कुछ कर सकूं? या that's a good question. In fact, to increase platelets, there are a lot of home remedies, you can say. And you must have heard like papaya leaves ka jo, and even the papaya fruit also, and pomegranate. So if you start that, there are a lot of tonics of papaya, and it's very helpful in human, like dengue fever. Yes. So one can start that, and papaya extract is very helpful. In addition to that, yes, we have to see that underlying cause. What is, how, why is the platelet loss happening? That we have to diagnose. Otherwise, in normal circumstances, like in tick fever, one starts with this, and there is no side effect of even Ayurvedic these drugs. And in allopathy, you will not find a cure for this. For increasing you will hardly get a allopathic drug. So sir, I'll tell you, हम लोगों ने with the initiative of Ayurveda for animals and taking healing back to the nature, हमने भी एक product बनाया है, which as you said is papaya carica based, papaya leaf based. Papaya is the wonder ingredient, I think. Agreed. Yeah, for increasing platelets and maintaining platelets. Yes. But सर हमने उसमें एक और इंग्रेडिएंट डाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बाकी इश्यूज को टैकल करता है जो प्लेटलेट की वजह से आ सकती हैं, वो है गिलोय, इम्यूनिटी के लिए। क्योंकि जब सर प्लेटलेट गिरते हैं तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है
तो इम्यूनिटी बॉडी की सबसे पहले इम्यूनिटी डाउन होती है। डेफिनेटली। तो उस टाइम में अब आप घर पे कहाँ गिलोय ढूंढोगे या कहाँ इम्यूनिटी की कुछ ढूंढोगे, तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया सर, सिरप बेस्ड, कभी भी लीजिए जब भी आपको लग रहा है आपका डॉग बीमार है, प्लेटलेट प्लस इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। एंड हमने एक सर फर्स्ट एड किट लॉन्च करा है जिसमें ये प्रोडक्ट हम आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे सिनेरियो में फर्स्ट स्टेप हम ले सके अपने एंड से। सर अब एक मेरा कॉमन डाउट है कि जैसे लो प्लेटलेट हो गया, तो हमने लो प्लेटलेट के बारे में बात कर ली। क्या हाई प्लेटलेट भी कोई चीज होती है? हाई प्लेटलेट इज ऑल्सो देयर, लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज लो प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोसिस another technical term is a high platelet. But high platelet is a rare disease. So normally we focus on thrombocytopenia only. It do happens, but that again is a very serious condition, and that is more fatal. कैसे सर होता कैसे इसका हाई प्लेटलेट का रीजन? लाइक जैसे इसमें कम होते हैं, उसमें ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाएंगे, तो क्या और ब्लड में ही क्लॉट बन सकते हैं। अच्छा, लंग्स में क्लॉट आ सकते हैं, हार्ट में क्लॉट। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है वहीं पे क्लॉटिंग शुरू हो सकती है। एंड इट विल देयर विल बी डिसऑर्डर ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड, so it is a very serious condition. अच्छा, this we can treat, but that is very difficult to treat. एंड इसमें सर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका एक्चुअली में कोई थिनर्स, ब्लड थिनर्स, we have like blood thinners, we have like anticoagulants. You can use that, and but it's a serious condition, and so it has to be immediately diagnosis. And third thing is one more. One is low, one is high, one is where platelets are defective. This is a new, I'm not heard before. I think हमारे viewers ने भी आज तक नहीं सुना होगा defective platelets. Because platelets are formed in the bone marrow. Yes, sir. So if the platelet itself is impaired or defective, abnormal, so you will find that. So this is normally in the hereditary diseases. And this is inherited from one to another. This do happen in the dogs also, but it's rare. Like a disease called von Willebrand disease. So it is a hereditary disease where the impaired abnormal platelets are. So that's new information for us as well as you, everyone who is watching this video. So sir, before we let you go, we have one question for the viewers which we ask in every episode. So what you have to tell us today is, what are the 5 symptoms of low platelet that you can figure out at home? Comment in the video, or just send us a DM. Do let us know. And once again, thank you for watching this show, and we thank Colonel Sudhir Yadav for being here and giving us very important information about platelets, which is a very ingredient part of the blood. नेक्स्ट टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का हो, तो वो भी हमें DM करके बताइए। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हम चूज़ करेंगे। अगर हमें आपका टॉपिक अच्छा लगा तो हम आपके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड वंस अगेन हैप्पी पेट पेरेंटिंग। थैंक यू। थैंक्स।